हेलो फ्रेंड्स लर्निंग कैप चैनल आपण मानक स्वागत। गतकाली आम किसी एमसीक्यू डिस्कशन करथिले जोटा कि वेयर सोल्डरिंग और जॉइंट ऊपर थिला। आज आउ किसी क्वेश्चन डिस्कशन करबा। चलंतु एबे क्वेश्चन डिस्कशन करबा। आज रो फर्स्ट क्वेश्चन हला व्हिच टाइप ऑफ वेयर जॉइंट इज फाउंड इन जंक्शन बॉक्स। से कहूछ केउ टाइप रो जॉइंट हमर वेयर जॉइंट जंक्शन बॉक्स रे मिले। तर ऑप्शन देला एरियल टैप जॉइंट, प्लेन टैप जॉइंट, रैट टेल जॉइंट, मैरेड जॉइंट। तो राइट आंसर एटी पिला माने कोन हो? ऑप्शन सी हे जो जोटा कि रैट टेल जॉइंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट? उडे पिक्चर आसीबो से को देखि के हम तर आंसर देबा। ई पिक्चर रो पचार होची व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट। से कुछ मैरेड जॉइंट ना स्क्रैप जॉइंट ना वेस्टर्न यूनियन जॉइंट ना ब्रिटेन स्ट्रेट जॉइंट। तो राइट आंसर एटी कोन हो पिला माने? तो राइट आंसर पिला माने जीवो मैरेड जॉइंट। तो मैरेड जॉइंट क्या को जाए जो थरे कि दीटारू अधिक कंडक्टर यूज करा जाए एंड टू एंड इंटरलॉकिंग है कि किंबा इन ट्विस्टिंग है कि से माने जॉइंट होंती जोटा कि स्टैंड्स टुगेदर है कि मेकिंग ए स्ट्रांग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। बुझि पले पिला माने मैरेड जॉइंट टाइप को जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जीवा। What is the use of Britannia joint? तर ऑप्शन देला extending the length of the lines, inside and outside wiring installation, mechanical stress not required on conductor because it दरकार नहीं conductor mechanical stress, tapping the service connection from overhead lines। तो राइट आंसर पिला माने कोन हो? जो ब्रिटेनिया टी जॉइंट रो यूज करते ऑप्शन है जो डी जोटा ला टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम द ओवरहेड लाइन ने तो टैपिंग करिया पय। जोटा कि राइट आंसर ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। व्हाट इज द यूज ऑफ डीप सोल्डरिंग जॉइंट? डीप सोल्डरिंग जॉइंट रे हमरो बेसिकली यूज कोन से कहूची सॉफ्ट सोल्डरिंग पय कि पाइपिंग एंड केबल सोल्डरिंग वर्क पय कि सोल्डरिंग नेचर कंपोनेंट्स पीसीबी रे यूज करिया पे कि सोल्डरिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पाए। तो राइट आंसर एटी पिला माने कोन हो? ऑप्शन सी जोटा कि सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी रे यूज करा जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। व्हिच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क? व्हिच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड हम बेसिकली को सर्विसिंग और रिपेयरिंग रे यूज करा जाए। ऑप्शन है कुछ डीप सोल्डरिंग ना सोल्डरिंग विथ फ्लेम ना सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन ना सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग आयरन। तो राइट आंसर एटी कोन है? जोटा ऑप्शन सी है जो सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल कुछ क्यों पार्ट हम अंडरग्राउंड केबल जोटा यूज करबे प्रोटेक्टिंग द मेटल स्ट्रेंथ ऑफ एग्नेस्ट कोरोजन एग्नेस्ट से हमको प्रोटेक्ट करे। सर्विंग ऑप्शन है बेडिंग आर्मोरिंग और लीड सेट। तो राइट आंसर एटी कोन हो? ऑप्शन बी इट है जोटा बेडिंग को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। व्हिच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरिया? के मेथड ऑफ केबल हमर जोटा यूज हुए बेसिकली लेइंग सुटेबल कोतरा माने कंजेस्टेड एरिया पे रैक्स इन एयर डॉग पाइप्स अलोंग विथ बिल्डिंग्स किंबा डायरेक्ट इन ग्राउंड। तो राइट आंसर एटी पिला माने कोन हो? डॉग पाइप मेथड केबल जो लाइन करा जाए जोटा कि कंजेस्टेड एरिया रे हमको सुटेबल होते हैं गोटे पाइप भलिया भीतर से हमर एज यूजुअल रहइबो।
The next question, what will happen to PVC insulation in cable carrier carries excess current continuously for long period? से कहूँ कौन हमर घटे जो कि पचार कि जदि हमर एक्सेस करंट कंटिन्यूअसली लॉन्ग पीरियड पे जदि हमर कैरी करे कोथर ना पीवीसी इंसुलेशन तले कोन हबो वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हे जिवो ना वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज हेबो ना इंसुलेशन रेजिस्टेंस बढ़ी जिवो ना इंसुलेशन रेजिस्टेंस कमी जिवो तले त राइट आंसर एटी पिला माने कोन हबो सबल मन रखिबे ए केस रे इंसुलेशन तार रेजिस्टेंस डिक्रीज हे जिवो अधिक समय जेतले रहले. The next question will be, what is the effect on molten solder due to repeated melting? कौन इफेक्ट रहेगा on molten solder repeated melting करा जाए. tin content reduce हे जिवो ना lead content कम हे जिवो ना prevent slug formation over prevent करिवो किबा uneven flowing of joints. तो राइट आंसर एटी हमर हे जिवो. Right answer it is our tin content reduced. Molten solder due to repeated melting. The next question, which type of soldering flux is used for soldering aluminum conductor? से कुछ क्यों टाइप का हम soldering flux यूज करा जाए कोतरे ना soldering aluminum conductor. ऑप्शन है दला टलो टलो कैजरलाइट जिंक क्लोराइड सल्मोना रेसिन. तो राइट आंसर इट इज हमरो ऑप्शन बी जोटा है केरलाइट. The next question, which type of joint is used for extending the length of conductor कटि जाइछि in overhead line? से कुछ क्यों टाइप रो जॉइंट हमर यूज करा जाए जोतर एक्सटेंडिंग लेंथ तार बढ़ाया पे कंडक्टर है. तो ऑप्शन देला स्क्रैफेड जॉइंट एरियल टैप जॉइंट ब्रिटानिया जॉइंट वेस्टर्न यूनियन जॉइंट. तो राइट आंसर हमर कोन हबो पिला माने एटा पिला माने तो कमेंट रे कहबा राइट आंसर कोन. Next question, which electrical device is the coarse excess current protection? ऑप्शन देला हमरो कैटिव फ्यूज रिवायरेबल फ्यूज मिनिएचर क्रिएचर ब्रैकेट एमसीबी नले एचआरसी फ्यूज. तो राइट आंसर कोन हबोटी ऑप्शन बी जो रिवायरेबल फ्यूज और बेसिकली यूज करा जाए. The next question जिबा, what is the unit of insulation resistance? Insulation resistance unit का ओम किलो ओम मिली ओम मेगा ओम. तो राइट आंसर इट इज हमरो मेगा ओम ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the effect on electric current on neon lamp? से कुछ neon lamp रे हमरो कौन इफेक्ट रहबो इलेक्ट्रिक करंट रो हीटिंग इफेक्ट रहबो ना मैग्नेटिक इफेक्ट ना केमिकल ना गैस आयनाइजेशन इफेक्ट. तो राइट आंसर पिला माने कोन हबो ऑप्शन डी जोटा गैस आयनाइजेशन इफेक्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमरो क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वैलेंस शेल ऑफ ए कॉपर एटम? से गोटे कॉपर एटम रो वैलेंस शेल हमर केतोटी इलेक्ट्रॉन रहे. द राइट आंसर कोन हबोटी 1 2 8 18. तो द राइट आंसर इट इज पिला माने 1. द नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जिबा, which cable laying method is used for generating station? Generating station हमर cable laying method यूज करा जाए इंडक्ट यूज करा जाए ना रैक्स इन एयर ना एलंग बिल्डिंग से यूज करा जाए ना डायरेक्ट इन ग्राउंड. तो राइट आंसर पिला माने कोन हबो ऑप्शन बी हे जिवो एटा रैक्स इन एयर. which type of soldering flux is used for soldering galvanized iron? जो क्यों टाइप रा सोल्डरिंग फ्लक्स यूज करा जाए फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन. रोसिन हे गला जिंक क्लोराइड सल्मोनिया हे गला
हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो राइट आंसर एटी कोन हो मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एथरे यूज करा जाय देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल आर फुल फॉर्म कोन क्रॉस लाइन पॉलीइथिलीन एक्सेस लाइन फेज अर्थिंग क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन एक्सेस लाइन पेपर एंड इबोनाइट तो राइट आंसर एटी पिला माने कोन हो ऑप्शन सी है जोटा कि हमरो क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन ओके फ्रेंड्स आज पे नेक्स्ट क्लास में मैं आउ सोल्डरिंग जॉइंट वायर ऊपर आउ किसी एमसीक्यू डिस्कशन करबा तापर हमर एमसीक्यू अलगा टॉपिक भी आरंभ करबा ता सहित आगामी हमें धीरे धीरे मॉक टेस्ट भी आरंभ करबा नॉन टेक रो जदि कोन डाउट रहउची पिला माने कमेंट करंतु को टॉपिक रो एमसीक्यू करबा कि मॉक टेस्ट करबा ठीक अछि पिला माने प्रिपेयर करंतु भल से पढंतु थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।